Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Students, today again I am here for your social study class, and today we will write about the unit number 2 exercise, which is learning good habits. Okay, so please open your neat notebooks. Today we will start writing of unit number 2. Look at this, students. You will draw margin lines in your neat notebooks like this. This is margin line and this is margin line. Clear? These are the margin lines. And then you will write here in first line social studies. Then C is for class and W is for work, class work, and you will write date. Clear? Then in next line you will write unit number 2, and unit number 2 is learning good habits. Unit number 2 is learning good habits. Topic is questions, answers. Clear? First one question is, what is the name of your school? This is the first question of unit number 2. First question is, what is the name of your school? So answer, you will write, my school name is Oriental Public School. Or you will write, my school name is OPS. Clear? आप इस तरह भी लिख सकते हो, my school name is Oriental Public School, or my school name is OPS. O, capital O stands for Oriental, capital P stands for public, and capital S is stand for school. So you will write, my school name is Oriental Public School. This is your answer of first question. Then after first answer you will draw double ending line here. Clear? After this we will write the second question, and second question is, how long have you been studying here? How long have you been studying here? When will you finish studying here? कब से आप यहाँ पे पढ़ रहे हो और कब यहाँ पे स्टडीज ख़त्म करोगे? आंसर लिखो, I have been studying here since 2017 and I will finish my studies here till 2024. आंसर है, I have been studying here since 2017 and I will finish my studies here till 2024. After writing the answer, you will draw double ending lines. Clear? Next question is question number 3. And question number 3 is, in which subject do you learn about numbers? You tell me, students, in which subject we are learning about numbers? Quick. हाँ, शाबाश. हाँ, कौन से सब्जेक्ट में हम नंबर्स के बारे में पढ़ते हैं? हम मैथ्स में, जो मैथ है हमारा, मैथमेटिक्स, उसमें नंबर्स के बारे में पढ़ते हैं. तो आंसर क्या होगा? क्वेश्चन है, इन विच सब्जेक्ट डू यू लर्न अबाउट नंबर्स? आंसर इज, इन मैथ वी लर्न अबाउट नंबर्स. इन मैथ वी लर्न अबाउट नंबर्स. ये आपका 4th क्वेश्चन का आंसर है. क्वेश्चन लिखने के बाद आप डबल एंडिंग लाइन जो है वो लगा लो. शाबाश. स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, वो है
write the names of the languages you learn in school. Write the names of the languages you learn in school. आंसर है इस क्वेश्चन का we learn English and Urdu languages in school. We learn English and Urdu languages in school. After question, you will draw double ending line like this. Okay. Next question is, why are sports good for us? Why are sports good for us? Answer: sports are good for us because it keeps us healthy and strong. Question number 5. Why are sports good for us? Answer is, sports are good for us because it keeps us healthy and strong. Because it keeps us healthy and strong. These are your questions. Students नीट लिखना है questions के आंसर्स और आपने कोई मिस्टेक नहीं करनी. बहुत अच्छी राइटिंग होनी चाहिए. क्लियर? ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन आंसर्स तो हो गए. नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है यहाँ पे नेक्स्ट पेज पे. आप लोग पेज टर्न करो. यहाँ ये वाला क्वेश्चन हमारा आता है. लुक एट द क्वेश्चन. ये है हमारा क्वेश्चन और क्वेश्चन है यहाँ पे ये वर्क पेज. क्लियर? वर्क पेज है यहाँ. ये देखिए आप वर्क पेज पे फर्स्ट है मैच द फॉलोइंग. क्लियर? ये दिया है मैच द फॉलोइंग. आपने जो यहाँ पे वर्ड्स लिखे हैं उससे रिलेटेड यहाँ पे जो है उसके साथ मैच करना है. फर्स्ट है हिस्ट्री. हिस्ट्री के बारे में हमने पढ़ा है कि हिस्ट्री जो है वो हमें पास्ट के बारे में बताती है. तो हिस्ट्री से आप एक लाइन लगा के यहाँ अबाउट द पास्ट यहाँ तक लेके आओ. ये मैं आप के लिए पहले से कर चुकी हूँ. यहाँ हिस्ट्री का आपने यहाँ पे लाइन खींचना है अबाउट द पास्ट. पास्ट के बारे में हमें हिस्ट्री बताती है. क्लियर? नेक्स्ट है मैथमेटिक्स. मैथमेटिक्स मैथ हमें नंबर्स के बारे में बताती है. तो मैथ के लिए लिखो अबाउट नंबर्स. क्लियर? मैथ अबाउट नंबर्स. नेक्स्ट है लैंग्वेजेस. लैंग्वेजेस रीडिंग, राइटिंग एंड स्पीकिंग. आर्ट, ड्राइंग एंड पेंटिंग. स्पोर्ट्स, exercising the body. Science about plants, animals and how things work. About plants, animals and how things work. Clear? About plants, animals and how things work. Geography, drawing and painting. Geography, art about drawing and painting. Sports, exercising the body. Science about plants, animals and how things work. Geography about the people and the countries of the world. Clear? History about the past. Mathematics about numbers. Languages, reading, writing and speaking. Art, drawing and painting. Sports, exercising the body. Science about plants, animals and how things work. Geography about the peoples and countries of the world. ये आपका आज के
लिए वर्क पेज और क्वेश्चन आंसर रिटर्न वर्क को नोटबुक में करने हैं। ये बुक में इसी तरह से नीट करें। इंशाल्लाह कल नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर है उसके साथ हाजिर होंगे और नेक्स्ट हम इंशाल्लाह जो हमारा वर्क पेज रहता है वो हम कंप्लीट करेंगे अपने यूनिट नंबर 2 का। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما.